हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी से रेसिपी को नोट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए फिर आज की वीडियो की ओर। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आपकी शाम की चाय का आनंद उठाने के लिए एक डिश प्रिपरेशन बना रहे हैं जिसका नाम है स्कोन्स। तो चलिए स्टार्ट करिए, रेसिपी को देखिए, फॉलो करिए, बनाइए और अपनी चाय का आनंद लीजिए शाम की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्कोन ओरिजिनेटेड इन स्कॉटलैंड एज अर्लियर एज 1505 अकॉर्डिंग टू मोस्ट। There are a couple of different origin stories of how the scone got its names, but the one that is most widely accepted in the story that refer to the stone of destiny, which is where the kinds of the Scotland were coronated. Other side, the story is that the word scone was adapted from the Dutch word, bear in the mind that each place pronounced the word scones quite differently. Also, depending on where you are, may be the deciding factor of what you are get when you order a scone. For example, in Britain, your scone will most likely to be slightly sweet. However, they serve savory scones as well. Things that may be added before the scones are baked, including currants, raisin, dates, seeds or cheeses. However, in their home Scotland, you might be served a soda scone, also known as a soda faris, potato scones or tati scone. A tati scone is like a thin pancake that is made from potato flour and is normally fried and served as a breakfast item. There is a lot of way to serve scones in a different way and different manner. It's depend upon the country that how they want to serve as per their need and what they like most. In terms of American scone, while similar to our biscuits, are made with cold butter and are a bit sweeter than their other scones. दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इस रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा और अपनी शाम की चाय का आनंद लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल इंडिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के अलर्ट के लिए। मैं शेफ नितिन जैन एनजे सिंपली कुलिनरी में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहेंगे, रेसिपी का आनंद लेते रहेंगे और घर पे ट्राई करेंगे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।